Let's take up some interesting questions from the miscellaneous exercise. Like this is a question here. He has given us the product of three matrices equal to 0. The first matrix is of the order 1 by 3. The second one is of 3 by 3. Third one is of 3 by 1. And as we know that the product of matrices is associative. मैं चाहे इन दो को पहले मल्टीप्लाई करूँ या चाहे पहले इन दो को मल्टीप्लाई करूँ, ठीक है ना, कोई फ़र्क नहीं पड़ता. चॉइस इज़ योर्स. राइट साइड इज़ नॉट अ ज़ीरो नंबर, इट्स अ ज़ीरो मैट्रिक्स. और इसका ऑर्डर क्या होगा जो सॉल्व करके लेफ्ट हैंड साइड का आएगा. ठीक है जी. हम क्या करते हैं, हम पहले इन दोनों को ही सॉल्व कर लेते हैं, फर्स्ट एंड सेकेंड को मल्टीप्लाई जब हम करेंगे इनको. सो व्हाट डू यू गेट एज दिस इज रो इनटू कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम. तो व्हाट विल द रिजल्ट इन 1 by 3, 3 by 3, 3 3 गया, 1 by 3 आएगा. ऐसे ही तीन एलिमेंट आएंगे. तो x इंटू 1 इज x, दिस विल बी 0 एंड दिस विल बी -2. फर्स्ट एंट्री विल बी x -2. ठीक है जी. एंड द नेक्स्ट एंट्री विल बी फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, this will be 0, this will be -10 and this will be 0, -10. What about the next third entry? It will be 2x -5 -3, that will be 2x -8. Okay ji. And now, so what was supposed to be the order? This 3 and 3 gone. It was supposed to be the order 1 by 3. आ गया 1 by 3. Very good. Now this is x 4 1 and this is equal to 0 matrix. I'll write in symbolic form only. So this is of the order 3 by 3. This is gone. It means that this will be a 0 matrix of order 1. That is, it will have 0 in it. So when you multiply these two, what do you get? X -2 into x will be what? X square -2x. ठीक है बॉस. उसके बाद ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो कितना बन जाएगा? -40. ठीक है. और ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो कितना बनेगा? plus 2x minus 8, right? And this will be equal to 0. So this will give you what? X square plus 2x minus 2x cancel, and this will be -48 equal to 0. This will give you what? X square is equal to 48, na? X is equal to, now there is an interesting thing that I would like to discuss with you. हम generally हम लोग क्या लिखते हैं? x square equal to 48, then x is equal to, right, under root of 48, which is equal to plus minus 4 root 3, which is absolutely wrong, because root will never give you negative output. तो एक्चुअल में होता क्या है इसका, अगर आपको कन्फ्यूजन है, इट इज़ x square -48 is equal to 0. And this will give you what? X square minus 4 root 3 whole square is equal to, that is root of 48 whole square. Now you apply a square minus b square will be a plus b, a minus b. This will give you x equal to plus minus 4 root 3. Okay. And sometimes he ask you for, if you could have written here for x greater than 0, okay, so then you would have taken only the positive answer, the negative answer will be rejected. I hope it has cleared everyone, right? There is a similar type of question, rather it appears to be similar, but it's a bit different. What is the difference? Here the matrices were given. We were supposed to find some missing entry of the matrix. In this case, the entire matrix is missing. He has given us a matrix X. He has multiplied it with the matrix of the order 2 by 3, and the answer is given to us. This is also of the order 2 by 3. Now I need to find this matrix X, right boss? अभी इन्वर्स हम के साथ मल्टीप्लाई करके आइडेंटिटी आना, बट हमने पढ़ा कि इन्वर्स एग्जिस्ट करता है किसका? सिर्फ स्क्वायर मैट्रिसेस का. तो इसको मैं इसका इन्वर्स फाइंड नहीं कर सकता. तो इसका मतलब मैं बेसिक कॉन्सेप्ट पे जाऊंगा. जब मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करता हूँ, ये मल्टीप्लाई कब होंगे? जब इसके नंबर ऑफ कॉलम्स और इसके नंबर ऑफ रोज क्या होंगे? बराबर. इसके नंबर ऑफ रोज कितने हैं? 2. इसका मतलब इसके नंबर ऑफ कॉलम्स भी कितने हो जाएंगे? 2. तो मुझे इसके नंबर ऑफ कॉलम्स पता चल गए. जब मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करता हूँ, जो उसका आंसर आता है, आंसर का जो ऑर्डर आता है, उसमें नंबर ऑफ रोज पहली वाली के होते हैं और नंबर ऑफ कॉलम्स दूसरे वाले के. नंबर ऑफ कॉलम्स 3 हैं, नंबर ऑफ कॉलम्स 3 हैं, और इसके नंबर ऑफ रोज कितने दिए हुए मुझे? 2. इसका मतलब इसके नंबर ऑफ रोज कितने होंगे? 2 होंगे.
It means I can assume this matrix X as A, B, C, D, a matrix of the order 2 by 2. And what else is given to me? 1, 2, 3, 4, 5, 6, and this is given to me is equal to -7, -8, -9, and then it is 2, 4, 6. And we know the multiplication of matrices. What you do is you multiply the matrices and then you equate them, you'll get the answer. This like this first entry will be what? This will be A plus 4B. What will the next entry? 2A plus 5B. Next entry 3A plus 6B. Talk about the C plus 4D. It will be 2C plus 5D. It will be 3C plus 6D. And this is equal to -7, -8, -9. And this is 2, 4, 6. You equate them, you'll get so many equations. ठीक है, solve for ABCD. You can solve it quite easily. You'll get the answer. I hope the difference in these two questions is pretty much clear to everyone, right? So here what the matrices were given to us, some of the entries were missing, we were supposed to find that, and in this case the entire matrix was missing. So before starting we need to know what will be the order of the matrix that is missing. तो जो भी उसका ऑर्डर था आपने उस ऑर्डर की जनरल मैट्रिक्स ले ली और उसकी जो एंट्रीज हैं उनको मल्टीप्लाई करके आपका आंसर आ जाएगा. एंड देन देयर इज अनदर वंडरफुल क्वेश्चन नंबर 15. बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है. दे रखा है इज स्क्वायर मैट्रिक्स सच दैट ए स्क्वायर इक्वल टू ए. वी नीड टू इवेलुएट दिस थिंग. ऑल दैट इज MCQ बट इट्स एन इंटरेस्टिंग वन. कोई बात नहीं, करिए सॉल्व. क्या हमारे पास I प्लस ए होल रेज पावर 3 -7a. तो वही कॉन्सेप्ट. अब मैट्रिसेस मल्टीप्लिकेशन है, स्क्वायर मैट्रिक्स ही होगी तभी उसकी पावर डिफाइन हो रही है. तो कॉन्सेप्ट लग जाएगा a प्लस बी होल क्यूब का. इट विल बी a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब -7a. तो साथ चलेगा ही चलेगा. अब इसका मतलब क्या हो गया हमारे पास? i क्यूब है, आइडेंटिटी को जितनी बार मर्जी मल्टीप्लाई करो क्या आएगा? i ही आएगा. तो आई स्क्वायर है, आइडेंटिटी को जितनी बार मर्जी मल्टीप्लाई करो क्या आएगा? आई. और आई इंटू ए जो है वो किसके बराबर होता है? ए के बराबर होता है. ठीक है ना. एंड आई रेज पावर एन विल ऑलवेज बी इक्वल टू व्हाट? आई. सो दिस विल बी 3a प्लस अगेन दिस विल बी 3a स्क्वायर प्लस a क्यूब -7a. अब आपकी चॉइस है, आप इसमें क्या करना चाहते हैं. आप इसको सब्ट्रैक्ट करना चाहते हो अभी शुरू में कर लो, कोई बात नहीं. 3a और -7a विल बी -4a प्लस 3. नाउ a स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट? a. तो दिस विल बी प्लस 3a बिकॉज a स्क्वायर इज इक्वल टू a. एंड सिमिलरली फॉर a क्यूब आई कैन राइट इट एज a स्क्वायर इंटू a. सो दिस इज इक्वल टू आई माइनस, ये हो गया 4a और ये -3a. तो कितना बच गया? -a प्लस a स्क्वायर किसके बराबर था? अगेन a के. a इंटू a कितना हो गया हमारे पास? a स्क्वायर. और a स्क्वायर किसके बराबर था हमारे पास? a के. a एंड a चले गए. दिस इज इक्वल टू आइडेंटिटी. दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. MCQ में भी आ सकता है, ऐसे भी सॉल्व करने के लिए आ सकता है. आई होप यू कैन सॉल्व द रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस. थैंक यू.